गुड इवनिंग। हाँ, गुड आफ्टरनून ऋषि। ओके, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिए पहले ही, जस्ट सॉल्व देम। हाँ, गुड आफ्टरनून वरुण। तो ये दो क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट सॉल्व देम फास्ट। बिल्कुल आसान से है। देखो, नीट 2018 का और जी सेट 2008 का क्वेश्चन है। डू इट फास्ट। तो देख लो, मैं करता हूं इसको कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। आपको पता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a raised to power n minus 1. नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब हाफ लाइफ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल। गॉट इट? समझ गए सारे कि आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ पे क्या असर होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इट इज ऑल्सो डबल। ठीक है, इसका बोलो सेकंड का जल्दी। यस, what will be the order of the reaction if value of the rate constant for the reaction is 125 liter per mole per second? बोलो। बाकी अपनी अटेंडेंस दे दो भाई, कौन कौन है। कौन कौन प्रेजेंट है। तो इसमें आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो क्या होता है, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड पावर एन। ठीक है ना, तो के इक्वल टू रेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड पावर एन बताया था। रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर रेज्ड पावर एन, मतलब मोल पर लीटर रेज्ड टू पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड मीन्स मोल रेज्ड टू पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज्ड टू पावर एन माइनस 1 पर सेकेंड। कंपेयर करो, लीटर 1 इक्वल टू एन माइनस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू 2।
second order reaction. Got it? मेरा स्लो है नेट. हाँ, वेरी गुड. साथ का मैसेज आ गया. इसमें ये मेरे दूसरे फोन में नेट स्लो चल रहा है, मैंने देख लिया. गुड. उसका आंसर आ गया है. माधवी, गुड आफ्टरनून. और साध, इसमें लाइव चैट ठीक से नहीं चल रही है. ओके गुड. हाँ, वसंत, अनेरी, साध, ओके वेरी गुड. ऋषि, ये वाइल्ड नेस्ट कौन है? और हरेंद्र, गुड. सो नाउ let us start today's lecture, that is pseudo unimolecular reactions. Pseudo unimolecular reaction. नाम से क्लियर है. सूडो मीन्स फेक, ओके, मिसलीडिंग. और यूनिमोलिकुलर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल वाला. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ reaction is present in excess. When one of the reactant is present in excess and its concentration remains unchanged during the reaction, such reaction which is of second order but which seems to be second order but have to be of फर्स्ट ऑर्डर. ऐसा रिएक्शन जो लग रहा है सेकेंड ऑर्डर बट है फर्स्ट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें हम तो क्या मिलता है? एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल. अब ये रिएक्शन किस ऑर्डर का लग रहा है? कि एसिड एस्टर की पावर 1, वाटर की पावर 1, बट इट इज एक्चुअली it should be like this, but H2O is in excess. If H2O is in excess, its concentration is almost constant, and therefore K into H2O become K dash. So such reaction is called pseudo unimolecular reaction. गॉट इट? समझाया कि ये ऐसा रिएक्शन जो कि बाई मॉलिक्यूलर लग रहा है कि दो मॉलिक्यूल है इसमें, तो रेट क्या होना चाहिए? और सिंपल रिएक्शन है कि ये तो चलो कैटलिस्ट है ना, बिल्कुल कम अमाउंट में होता है, बट ये दोनों तो होने चाहिए. बट वाटर क्योंकि एक्सेस में है,
जैसे पूरा ओशन में से एक बकेट पानी की निकाल लो तो इट सीम्स लाइक नथिंग इज चेंज्ड. सेम द केस हियर कि दिस इज इन लिमिटेड अमाउंट and this is in excess. Suppose 0.1 mole, 10 mole. So when reaction takes place, 9.9 moles of water left, almost 10. So such an amount is considered as constant, and therefore that become another constant, and reaction follows first order kinetics. Such reaction follows first order kinetics and it is called pseudo unimolecular reaction. ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ? हाँ यश, गुड. अच्छा, डीपीएस बोपल, वाइल्डेस्ट डीपीएस बोपल जेड बैच. ओके ग्रेट. तो समझ में आया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कि ऐसा रिएक्शन, ठीक है, आप लिख सकते हो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, its concentration remains unchanged during the reaction. Such reaction which seems to be of second order but have to be of first order. For example, this one more example is there. देखो, hydrolysis of cane sugar. Hydrolysis of तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर में वी हैव C12H22O11 प्लस H2O टू गिव एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज और ये सुक्रोज. इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में होगा, पर इसको बोलते हैं. ठीक है ना. अब बताओ ये रिएक्शन भी कैसा है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में होगा? ऑब्वियसली वाटर. सो दिस रिएक्शन आल्सो हैज रेट, इसको K लिखो, K डैश लिखो, whatever, but it is rate constant. And this reaction is also pseudo unimolecular reaction. तो यहां तक आपका पॉइंट हो गया कि ये ओके. गुड आफ्टरनून. अच्छा कमल, ग्रेट. ओके, तो ये अपने पास वाटर इज एन एक्सेस और ये हो गया अपना pseudo unimolecular reactions. अब लिखो, मैं बीच में करवा भी चुका हूं वो क्वेश्चन, बट फिर भी लिख लो. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द rate of reaction. Effect of catalyst on the rate of reaction. अब सबको पता है कि कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बट इसमें हम एनर्जी कंसेप्ट से करेंगे इसको कि ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होता है, या तो ऐसा, या मतलब कि रिएक्टेंट से ये जो बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जैसे मान लिया आपने HH लिया, ये मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, HHII लिया. ठीक है ना. HH के बीच में बॉन्ड है, I के बीच में बॉन्ड. अब क्या होता है, ये दोनों आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि HH बॉन्ड टूटना शुरू होता है, I बॉन्ड टूटना शुरू होता है और HI बॉन्ड बनना शुरू होता है. This simultaneous breaking and formation of bonds. देखो, breaking and formation, this is called
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसकी क्या होती है, बिल्कुल ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है ना, इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, बट याद रखना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हाईएस्ट होती है, वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज नहीं होती, वो मैक्सिमम अटेन कर लेती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। समझ गए? ओके, अब ये दोनों जुड़े तो ये बनेगा HI प्लस H। तो इसका मतलब अगर H2 प्लस I2 को, जो जहां पे है, उसको प्रोडक्ट बनाना है HI, ऑब्वियसली H2 प्लस I2 तो 2HI बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बनाना है अगर, तो उसको यहां तक जाना पड़ेगा, और ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन, that is the energy required to activate the reactant molecules to form product। अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तब चांस बनता है कि प्रोडक्ट बने। It is the energy required to activate the reactant molecules to form product। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना ये, this is the extra energy required to activate the reactant molecules। okay, I can write extra energy। ठीक है, इसका मतलब इतनी एनर्जी आएगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड टनल, इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, ये है विद कैटलिस्ट, और ये विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो गई, इतनी सी एनर्जी चाहिए अब, इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल पार हो जाएंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये समझ में आ गया ना आपको? ओके, सो catalyst increases rate of reaction by providing alternate path of lower activation energy क्या लिखा, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया। सोनाली, गुड आफ्टरनून। ओके, तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट, किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, now okay, so now most important part of this chapter, Arrhenius equation, first order reaction and Arrhenius equation, they are most important. Okay,
Arrhenius equation. Now, what is Arrhenius equation actually? It gives us the quantitative effect of temperature on a rate constant. It gives quantitative effect of temperature on rate constant. Now, temperature affect the rate constant as well as the rate of reaction. So actually what happened? Because this is the graph. Okay. Energy of reactant, activated complex energy. This is activation energy. And at the same time, Boltzmann distribution of energies. Delta N by N versus E. If we plot the graph, it is like this. This you have done in class 11. That molecules with very low velocity, यहाँ velocity लिखो या energy एक ही बात है. Molecules, fraction of molecules with low velocity are less. Molecules with higher velocity or energy increases continuously, reaches a maximum, and then on further increasing energy, molecules with higher energies are less. That means molecule with lower energy, very low energy, and molecule with very high energy are very less. Molecule with intermediate energies are maximum. Okay. Now what happened when we increase the temperature? When we increase the temperature, then molecule with lower energy क्या होंगे? Low energy के molecule क्या होंगे? Yes, temperature बढ़ेगा. Okay, when temperature increases, then molecule with low energy decreases because molecule energy of the molecule increases and molecule with higher energy increases. The graph is like this. क्या किया हमने? T2 is greater than T1. See, T2 is greater than T1. When temperature increases, then what happened? Molecule with the lower energy, these are the molecules. Okay, fraction of molecules. So that fraction decreases, lower energy fraction decreases, and higher energy fraction increases. Now let us suppose the molecules having energy more than this. This is activation energy. Okay, molecule with energy more than this can form product. This fraction is e raised to power minus Ea by RT. E raised to power minus Ea by RT. This is fraction of molecules with energy equal to or greater than Ea. So e raised to power minus Ea by RT is fraction of molecules with energy. Who is this? हाँ जी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हो? बोलिए सर, बोलिए. बोलिए जी, बोलिए. मैंने कर दिया है परसों जब मैसेज आया था, तो मैं दोबारा कर देता हूँ, है ना? दोबारा कर देता हूँ. ठीक है, ठीक ठीक, ओके, ठीक, ठीक है, ठीक.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू. Okay, sorry. So fraction. This is the fraction of molecules with energy equal to or greater than EA. This is the fraction. Okay. Now, when we increase the temperature, then what happened? This fraction increases. That means more molecules get activated. More molecules get activated. Okay. Same is the case here. See, when temperature increases, what happened? Energy of the reactant increases. What about the energy of the activated complex? That I told you that when energy temperature increases, energy of the activated complex remains same. It will not be affected by temperature. Only energy of the reactant is increasing. So it comes closer to activated complex. Means activation energy somewhat decreases. Got it? So you will write that when we increase the temperature, the fraction of molecules with energy equal to or greater than EA increases, and so rate of the reaction increases. Okay? तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर fraction of molecules with energy ये पूरा equal to or greater than EA increases, so is the rate of reaction, or we can say rate constant. Means on increasing temperature this fraction increases, so rate of reaction as well as rate constant increases. Okay, now this value of, according to Arrhenius equation, k equal to a into e raised to power minus EA by RT. This is the equation. See, when temperature increases, then k increases. Okay, and k equal to a into e raised to power minus EA by RT. Okay, where k is rate constant. Just write down what is k. K is rate constant. A is Arrhenius constant, or देखो, it is before exponential factor. It is also known as pre-exponential factor. Or it is also known as frequency factor. Just note down what is k, what is a. Now see, as k equal to a e raised to power minus EA by RT, EA is activation energy. What is R? R is gas constant. Its value is either 8.314 joule per Kelvin per mole or 2 calories per Kelvin per mole. Okay, and T is temperature in Kelvin. EA is activation energy. Now taking natural log,
on both sides, what happened? It become natural log of k equal to natural log of a minus EA by RT, because natural log of E is 1. So natural log of k equal to natural log of a minus EA by RT. Got it? Now taking common log, so it is 2.303 equal to 2.303 log of a minus EA by RT. Implies log of k equal to log of a minus EA by 2.303 RT. Now just plot the graph. K is rate constant, A is Arrhenius constant, pre-exponential factor or frequency factor. And what is the maximum value of K? That is equal to A. That we do after some time. If we plot a graph between natural log of K versus 1 upon T, graph is, बताओ कैसा ग्राफ होगा? तो आपकी टर्न आई अब. Okay, Arrhenius constant value is given to you because that is different for different reactions. Okay, depends upon the reaction. Okay, its value varies. Yes, tell me. Graph is okay. Basant, what is actually natural log and common log? There is a relation between them. Natural log of A, that is log of EA, that is equal to 2.303 log of A. Its base is 10. When base E, natural log has base E and common log has base 10. So when natural log is converted into common log, we multiply it by 2.303. Keep in mind. Always there. Zero order, first order में भी ऐसे किया था हमने. Okay, done. Slope is negative, very good, and it is graph is straight line, very good. Saad writes it, the degree is very good. So it is like this. Okay. So what is slope? Tell me. What is the value of slope? Very good. Respond fast. Value. Yes, it is straight line. And what is the value of slope? Do it fast. What is the value of slope? Slope is A. A is intercept. Intercept is natural log of A. Okay? And slope is, yes, it is minus EA over R. Okay? Now, if we plot a graph between log of K versus 1 upon T, same graph, intercept is log K and slope is minus EA by 2.303 R. Okay? This equation is very, very important. Note कर लिया है? Okay. Now, up to this, any doubt? Very good, Kaval. Minus EA by RT. Good. Minus, Swati, minus EA by RT. Okay? Yes. Great. Okay. Now, let's do where A is the problem actually. Because if A is not given, we cannot calculate K. So, to eliminate A is constant, right? So, first equation is K equal to A e raised to power minus EA by RT. This equation turns into natural log of K equal to natural log of A minus
EA by RT. Then third equation of the same is log of K equal to log of A minus EA by 2.303 RT. Okay. Now let a rate constant is equal to K1 at temperature T1 and rate constant is equal to K2 at temperature T2. Keep in mind, on changing temperature, rate constant changes, but A remains same. A does not change. So first for this, it becomes log of K1 equal to log of A minus EA by 2.303 RT1 and log of K2 equal to log of A minus EA by 2.303 RT2. Okay, now from here let us take it as log K2 minus log K1. So log A cancelled. EA over 2.303 R T2 with negative sign and this becomes plus EA by 2.303 RT2. Okay. So it becomes log A minus log B is, yes, log A minus log B is equal to what? Log A over log A minus log B is equal to दोनों जगह 2. Oh, sorry. Yes, it is log T2 and this is T1. Sorry, because log K2 is this. Because log A cancelled and this minus become plus. So EA over 2 is R T1. Thank you very much. So log A over B. So it becomes log K2 by K1. That is equal to EA over 2.303 R. This part is common. It becomes minus 1 upon T2 plus 1 upon T1. Right? So log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R. T1, T2 common. So it becomes T2 minus T1. So log of K2 by K1 either equal to EA over 2.303 R. Either write it as 1 upon T1 minus 1 upon K2 by K1 equal to EA over 2.303 R. T1, T2 is T2 minus T1. So this is extended form of Arrhenius equation. This is logarithm form of Arrhenius equation. This is extended extended form of Arrhenius equation, or we can say integrated form of Arrhenius equation. Now let us do some questions on it. There are so many questions.
It is working. Okay, great. So let us do some cases. Like say you have done that k equal to a e raised power minus a by rt, right? Now case 1, k is equal to a if k equal to a if temperature is, yes, what about temperature? K equal to a when e raised to power 0. Okay, so t is infinity, or k equal to a if activation energy is 0. These are the two cases when k equal to a. A means maximum theoretical rate constant. मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a, because e is पर minus something, it can never be, k can never be greater than a. Okay, say when temperature increases, what happened? ea by rt decreases. ea by rt decreases. So e raised to power minus ea by rt, because it decreases, so e raised to power minus ea by rt increases, and so k increases. Same case when temperature decreases, then ea by rt increases, so e raised to power minus ea by rt decreases because it is negative part, and so k decreases. Just note down. Now let's do some questions. Question is from JEE Main 2019. If a reaction follows Arrhenius equation, if a reaction follows Arrhenius equation, the plot natural log of k versus 1 upon rt. Keep in mind, it is not 1 upon t, it is 1 upon rt, gives straight line with a gradient minus y unit. The energy required to activate
the reactant is, फर्स्ट ऑप्शन है y ओवर r यूनिट, बी ऑप्शन है y यूनिट, सी ऑप्शन इज y into r unit, and last is minus y unit. Yes. Wow. Harinder Kumar, it is y, very good. It is b. Okay, great. Say you have equation natural log of k equal to natural log of a minus ea by rt. Is it like that? So when we plot the graph, earlier we have plotted the graph between natural log of k versus 1 upon t. Instead of 1 upon t, now it is 1 upon rt. Instead of 1 upon t, it is 1 upon rt. So graph remains same, but now slope is equal to, what is slope? If we plot natural log of k versus 1 upon rt, it is minus ea. तो एक नई टर्म मिल गई आपको, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वही स्लोप. ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये होता है ना tan थीटा. तो ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं. देखो ग्रेडियंट वर्ड हमने यूज नहीं किया था, पर इसने ग्रेडियंट पूछा है, तो ग्रेडियंट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप. तो स्लोप is minus y here, that means minus y equal to minus ea, minus minus cancel, so y equal to ea. So that means b option is correct. Very good, it is minus ea. Swati, good. Slope is minus ea and here it is given minus y. तो याद रखना ग्रेडियंट इज सेम एज स्लोप. देखो उसने बोला, लिखा है ग्रेडियंट, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आइडिया लगाना है आपको, ग्रेडियंट भी स्लोप ही होता है. जिसको पता है इट्स ओके, ठीक है. नहीं पता है तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है और ग्रेडियंट माइनस वाई बोल रहा है, देखो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस में है कुछ चीज, तो इसका मतलब स्लोप ही है. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपका जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है. एक और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कंसीडर द गिवन प्लॉट्स, consider the given plots for a reaction obeying Arrhenius equation, (0°C to 300°C. K and EA are rate constant and activation energy. Respectively. K versus EA, एक ग्राफ ऐसा है,
और दूसरा K वर्सेस T, ये दो ग्राफ है, ठीक है ना, 1 and 2. Choose the correct option. A is 1 is right, 2 is wrong. B, both 1 and 2 are correct. C, 1 is wrong, 2 is right. And last is both 1 and 2 are wrong. Yes. Tell me. Option C means 1 is wrong, 2 is right. Okay. Anybody else? Fast. Respond fast. Swati writes B. Both are correct. Okay. Harinder B. Saad B. See. Anare B. Okay. So B, we will go with B. Okay. Audience poll. Okay. See. As you know, K equal to A e raised power minus E by RT. Now see, here EA increases. As EA increases, then E raised to power minus EA by RT decreases. So K decreases. See, K decreases. That means it is right. Now come to this. As temperature increases, E raised to power minus EA by RT. As temperature increases, this part also increases because T increases, so EA by RT decreases. See, A increases, so EA by RT decreases, but E raised to power minus EA by RT increases, so K increases. So this is also right. That means B is right option. Very good. Great effort. Good. So now come to question number one more question from the JEE Main 2019. Question is, for the reaction of H2 and I2, for the reaction of H2 and I2, the rate constant is 2.5 into 10 raised to power minus 4 decimeter cube per mole per second and at 327 degrees Celsius, and 1.0 decimeter cube per mole per second at 5
27 degrees Celsius, the activation energy for the reaction in kilojoule per mole is R is given 8.314 joule per Kelvin per mole. Just do it. I will write the options. 166, 150, 72 and 59. Same JEE Main 2019. Okay, so do it. K1 is 2.5 into 10 raised per minus 4. And T1 is, say T1 is given in degree Celsius. So you have to convert it into Kelvin. So it is 600 Kelvin. And K2 is and what is T2? 527 plus again 273, 800 Kelvin. So equation used is we have to calculate activation energy, means EA. So formula that you have to remember, log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 over T1 into T2. Just put the values. K2 is K2 is 2.5 into 10 raised per minus it is 1. K2 is 1 and K1 is 2.5 into 10 raised per minus 4. Okay, and is equal to EA divided by 2.303 into 8.314. T2 is 800 minus 600 divided by 600 into 800. हरिंदर कुमारी और क्या नाम है आपका? हरिंदर, मैं जानता हूँ. A option is correct. Okay. You are doing so fast. Okay, so now here it become log of, yes, 10 raised to power 4 over 2.5 equal to EA by 2.303 8.314 into 600 into 800 into 200.
such a calculation you should use log table. Okay, now from here it is log of, you can write it as 0.25, so it becomes 1000. 1000 over 25, 200 into, just cancel 2 zeros, it is 2.303, even it becomes 2.303 into 8.314 into 3 into 800, ये कितना हो गया? log 40 so activation energy is 2.303 8.314 2400 into 1.6. मैंने बताया था आपको log 4 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू 0.3, तो log 4 की डबल 0.6 और 1 डेसिमल क्योंकि 40 है तो 1.6. सो जहां से जूल्स में आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा. हाँ, साध ने भी कर लिया. और ओके, सो ये पहले जूल में आंसर आएगा, जो भी आएगा, ठीक है ना. फिर किलो जूल में आप उसको कन्वर्ट कर लोगे. कितना आता है जूल में आंसर? मेरा गलत क्यों आ रहा है? सही किया मैंने. मेरा आंसर गलत आ रहा है भाई. ये मैंने ठीक किया है. log 40 नहीं होगा. ओके सॉरी, कितना होगा? सो इट इज 1000 ओवर, इसको 2.25 कर दिया मैंने, तो ये 100 हो जाएगा. ओके, log ओके 2.5 को मैंने 25 किया तो ऊपर भी ऐसा हो जाएगा. ओके, तो 4000 होगा. ओके, देख लो एक बार. एल पर 4, ओके 1 2 3 4 5. ओके, 2.5 को 25 किया तो ऊपर भी. ओके गुड, तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये 3 0 बचेंगे. हाँ 4000. गुड. सो ये कितना हो गया? 3.6. ओके, सो व्हेन वी कैलकुलेट, सो कितना आता है? ओके 165.431 joule. So it is 165.43 kilojoule, means round about 166 kilojoule. Okay, good. Right. तो ये अपना आया अप्रोक्सीमेटली 166 किलोजूल. ग्रेट. Now let's do some question from NEET.
It is from तो 15 का क्वेश्चन सिंपल था कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो फ्रॉम द स्लोप ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t, ये तो 15 का क्वेश्चन है। तो 13 का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन if its rate doubles when the temperature raised from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Again, R is given to you 8.314. Options are 34.7 kilojoule per mole, 15.1 kilojoule per mole, 342 kilojoule per mole, 269 kilojoule per mole. Let's do it. For a reaction, its rate doubles, means K2 by K1 equal to 2. K2 by K1 equal to 2. T1 is 20 plus 273 means 293 Kelvin, and T2 is, keep in mind temperature is always in Kelvin, 35 plus 273 means becomes 8 293 and 3 ठीक है, ओके। Do it fast. Again, formula is same. Log K2. This is question from NEET 2013. Log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2. Yes. आपका आंसर आने तक करता रहता हूं। EA by 2.303 into what is R? 8.314 308 minus 293 divided by 293 into 308. So EA equal to 2.303 8.314 293 308 into 0.3010 and divided by 15.
इसी का आंसर अभी भी नहीं आया, आंसर सी। वेट 20 साथ रॉन्ग, इट इज कहीं पॉइंट्स में गलती होगी आपसे। अनेरी सी, ऑप्शन सी इज देयर 2.303। wait, I will collect 2.303 into 8.314 into 293 into 308 into 0.3 and divided by 15. It comes out to be 33,4,558 joule. That means it is 34.5 or 34.6 kilojoule. So option A is correct, right? Yes, it is A. Very good. Shobna Connor, I don't know who is this. Option A is correct. Actually, say it is 34558 point something in joule. So in kilojoule it is 34. Okay. Now write down what is temperature coefficient. टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, देखो एक लिया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ किया था हमने, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 divided by rate constant at temperature T, or we can say in degree Celsius T1 then rate constant at temperature T+10 divided by rate constant at temperature T. This is called temperature coefficient of rate constant. So as a rough estimate, as a rough estimate, for every 10 degrees Celsius rise in temperature, rate constant is almost doubled or sometimes tripled. Okay, so that means temperature coefficient for most of the reaction is varies between 2 to 3. Okay, सबको समझ में आ गया ना ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कांसेप्ट? ओके, स्वाति ने भी कर लिया था ये। अच्छा वसंत, ओके ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे देयर इज अ क्वेश्चन। अब देखो रेट कांस्टेंट
is increased by temperature coefficient when temperature increased from T1 to T2. When temperature is increased from T1 to T2, then rate constant is increased by temperature coefficient raised to power T2 minus T1 over 10. याद रखना है क्योंकि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इट इज डबल्ड, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बराबर बढ़ता है ना वो, तो पावर क्या हो जाएगी, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय 10. ओके, सो क्वेश्चन है आपके पास, the rate of a reaction doubles for every 10 degrees Celsius rise in temperature. Question is the rate constant of a chemical reaction doubles for every 10 degrees Celsius rise in so what is temperature coefficient, बोलो जल्दी, अगर इतनी सी स्टेटमेंट है, so what is temperature coefficient, tell me जल्दी. The temperature is raised by 50 degrees Celsius, the rate of reaction increases by about जल्दी आंसर. What is temperature coefficient of this reaction? बोलो. Answer is 10. I think you are wrong, but let me check. (22) wrong. Yes, tell me. Temperature coefficient raised to power 4. Say it is written rate constant of a chemical reaction doubles for every 10 degrees Celsius rise in temperature, and if temperature is raised by 50 degrees Celsius, this temperature difference is given. It is not that initial temperature is 10 and then it is 50. Temperature is raised by 50 degrees Celsius. That means T2 minus T1 is given to us. T2 minus T1 is 50. Okay, so 50 degrees Celsius is equal to 50 Kelvin because it is change in temperature. Change is same. Okay, change में नहीं करते हम ये, क्योंकि इसको राइज लिखा है ना सिर्फ, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो कितना है 2, बिकॉज उसने टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिख दी है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. क्योंकि k at t plus 10 divided by kt is given to
समझ में आया सबको? बोलो आंसर जल्दी, आपसे आंसर चाहिए मुझे. It is okay. So now you know it is 2 raised to power temperature coefficient raised to power 50 over 10. That is 2 raised to power 5. So it is 32. So option C is correct. Done? Any doubt? Okay. C, very good. Next, a reaction A forms two products. Reaction A forms two products A to B with rate constant K1. Activation energy EA1. A to B is K2. Activation energy EA2. If EA1 is equal to 2 times EA2 is equal to 2 times EA1, then K1 and K2 are related as K1 is equal to 2K2 e raised to power EA 2 by RT, or K1 equal to K2 e raised to power EA 1 over RT, K2 equal to K1 e raised to power EA 2 by RT, K1 equal to A K2 e raised to power EA 1 over RT. Yes. Okay, so see, first of all, from here K1 is equal to A e raised to power minus EA 1 by RT. K2 equal to A remains same, A e raised to power, because it is A B, so take it as A dash. Okay, so EA 2 over RT. So K1 by K2 is equal to A dash e raised to power minus EA1 by RT over A dash EA 2 by RT. A dash cancel. So K1 by K2 equal to e raised to power minus EA1 minus EA, okay, minus is plus, so it becomes minus EA1 plus EA2 RT, right? So that implies K1 by K2 is equal to e raised to power EA2 is equal to 2A1, so minus EA1 plus 2EA1 over RT. It means K1 by K2 equal to e raised to power EA1 by RT. So K1 equal to K2
EA1/RT. K1 is equal to K2 EA1/RT. It is B option. It is B. Okay, just note down. Got it? How do we do it? Any doubt up to this? So let's complete it today because only 5 minutes. I need 5 minutes only. So last topic is of this chapter as per our NCERT. Okay, collision theory. So according to collision theory, तो the rate जो है that is proportional to number of effective collisions. A rate is proportional to number of effective collisions. So according to this, if ZAB is collision frequency, means it is number of collisions between reactants per unit volume per unit time. If ZAB is this, और दूसरा ये तो आपने किया ही है, e raised to power minus EA by RT, e raised to power minus EA by RT, fraction of molecules with energy equal to or greater than EA, then according to collision theory, rate is ZAB into this. That is collision theory. Simple. K is replaced by rate, A is replaced by ZAB. So Arrhenius equation, just compare. According to this, K equal to A e raised to power minus A by RT. And according to collision theory, simply instead of K it is rate, instead of A it is ZAB. This is collision theory. But ये बोलता है कि according to this collision theory, the rate comes out to be different from the experimental rate. जो बोलता है experimental rate होता है that is different from this value. So why is it so? तो वो उसके डीप में जाता है एक्चुअली. ये बोलता है कि कोलिजन थ्योरी बोलते हैं कि कोलिजन से रिएक्शन होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन EA कोलाइड करते हैं तो दे लीड्स टू प्रोडक्ट. बट देन दिस मिथ वाज एक्सप्लेन कि मान लिया अपने पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, and OH negative ion attack on it and it leads to the formation of product. Take it as Rx OH negative to give ROH प्लस X नेगेटिव. ये मैं बाद में आपको क्लियर करता हूं. वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी. उसने बोला मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स, इट नेग्लेक्ट इट्स स्ट्रक्चरल फीचर.
उसने स्ट्रक्चरल फीचर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। होता है कि जैसे मान लिया ये मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है ना, तो अगर इस मॉलिक्यूल में सेम साइड से इसी साइड से OH नेगेटिव आयन आता है तो दे रिपेल ईच अदर, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, so they repel each other and no product is formed even if their energy is greater than activation energy। हमने अभी क्या पढ़ा था, जो भी मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट यहां क्या आ गया, ओरिएंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, ओरिएंटेशन। ये बोलता है कि अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर हो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और अगर ऐसा हो OH नेगेटिव है ना, अगर बैक साइड से आए तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड देन इट गेट्स अटैच्ड तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ना शुरू हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल इससे, ये एटम इससे दूर होना शुरू हो जाएगा। इनकमिंग ग्रुप, आउटगोइंग ग्रुप, ठीक है। सो वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट इफ ओरिएंटेशन इज प्रॉपर। ये ओरिएंटेशन वाला पार्ट किसी को कोई डाउट इसमें? अशोक कुमार, आई डोंट नो, बोलो। ये ओरिएंटेशन का पार्ट क्लियर हुआ? तो बोलता है कि हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EA कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। बट ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी तो होनी चाहिए, मतलब दो फैक्टर काम करते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द रेट, एनर्जी फैक्टर एंड सेकंड इज orientation factor. So old collision theory will not take into account orientation factor. So if P is probability of molecules with proper orientation, then product is formed. Only then product is formed. Means according to modified collision theory, rate is equal to P into ZAB into E raised to power minus EA by RT. If we write this P, then rate calculated by this equation is almost close to the experimental rate. It is totally theoretical concept, but if we multiply it with this probability factor, that is also called probability factor or orientation factor, and this probability factor is the probability of the molecules with proper orientation, okay। तो ये क्लियर हो गया आपको सबको कि क्या बताया मैंने आपको कि एक तो मॉलिक्यूल के एनर्जी, पहला फैक्टर है कि एनर्जी EA से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सो इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे? Effective collision is one in which reactant molecules have energy equal to or greater than EA, and
at the same time they should have proper orientation. ओके, तो इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी कि इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं? द कोलिजन द वन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ये एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मॉडिफाइड or we can say modern collision theory, and the rate calculated by this equation is very close to the experimental rate. Okay, but collision theory की limitation क्या है? पहला, it consider the molecule as hard spheres. उसने बोला मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर होते हैं, जैसे बॉल आपस में टकराती है ना, हार्ड बॉल्स, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो वही बोल रहा है कि जैसे कोलिजन करेंगे और उनकी एनर्जी ये से ज्यादा होगी तो वो हमेशा प्रोडक्ट बना देंगे, कोलिजन थ्योरी बोलती है. उसके हिसाब से उसने कैलकुलेशन की ये वाली, बट जब उसने ये कैलकुलेशन को एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया, एक्सपेरिमेंट से उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द केस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट रेट वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, theoretical value is very high but experimental value is less. Then he talked about orientation. He takes into account orientation. Orientation कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर. और मैंने प्रॉपर का आपको एग्जांपल दे दिया कि नेगेटिव नेगेटिव पास सामने आएंगे तो इम्प्रॉपर, बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रॉपर. ओके, एक बार वो ओरिएंटेशन वाला पार्ट एक बार फिर मैं लिख देता हूं अच्छे से कि अपने पास ये मॉलिक्यूल था, कोई भी R1 R2 R3 ये था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. OH नेगेटिव आयन अगर फ्रंट से आता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाता. क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कोलिजन है, क्योंकि मॉलिक्यूल को थोड़ी पता है कि कोलिजन कहां से करना है. यहां से अगर कोलिजन होता है और एनर्जी E से ज्यादा है तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना. बट अगर वही बैक साइड से आता है तो, क्योंकि ये वाला पार्ट इसको निकलता जाएगा इसमें से और ये वाला पार्ट इससे अटैच होता जाएगा तो प्रॉपर होगा. Then product is formed. Then this is called proper orientation. So P is always less than 1. So rate कम आएगा and it's close to experimental rate. Okay. So that's all about this equation. Sonali Sahu. I don't know. New students may contact me on this number so that I will add them in the group 9904852775. So that's it. ये तक रखते हैं. टाइम थोड़ा ओवर हो गया आज के लिए, सॉरी फॉर दैट. बट ये एनसीईआरटी का जितना भी नटशेल में हमने पूरा कर लिया है, ठीक है. इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो कर लेना आप, ठीक है. और बाकी जो बचे हुए हैं वो हम कल, हो सकता है कल अगर मैं बता दूंगा आपको कल की क्लास का, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी अ क्लास. टुमारो आई विल ट्राई.
Okay, so God bless you all. Jai Hind, Jai Bharat.